पळय ओके आयकपाक येना तूं आयकपाक येना जस्ट ट्राय कर मागीर कितें चुकलां तें मागीर रिकॉर्डींग पळय तूं ओके वाचल एक मिनट हांव मातसो पळय आतां सारकें येता काय अजून प्रॉब्लेम जाता सारकें येता. आं ओके ओके सो आतां म्हणल्यार कितें केल्लें आमी स्टार्ट केल्लें खंयच्यान स्टार्ट केल्लें ओके डिफरंट टेस्टींग मेथड्स सो तुमकां स्ट्रेटनेस सांगलेलें रायट स्ट्रेटनेस जालें आमचें स्ट्रेटनेस मेजरमेंट देन नेक्स्ट कितें केल्लें आमी फ्लॅटनेस स्क्वेअरनेस ओके हे सगळे डिफरंट मेथड जे आसा स्ट्रेटनेस फ्लॅटनेस स्क्वेअरनेस सो आतां म्हणल्यार आमी जें कितें पळयलां ओके आतां म्हणल्यार कितें जें पळयलां दोज दीस मेथड्स खंयचे खंयचे मेथड्स जे पळयलां दोज मेथड्स आर ओन्ली यूज्ड फॉर मशीन्ड कंपोनंट ओके सो मशीन कंपोनंट आसा तेजी फ्लॅटनेस सपोज चॅक करपाक जाय वी कॅन यूज स्पिरीट लेवल रायट ऑर ऑटो कोलिमीटर ओके सो ओन्ली फॉर मशीन कंपोनंट और वर्कपीस सुद्दां म्हणपाक शकता तुमी वर्कपीस ओके सो नाव वी वील लूक वन मेथड ओके फ्लॅटनेस टेस्ट सपोज करपाक जाय आमकां केजी सांगता तुमकां हांव फ्लॅटनेस टेस्टींग पळय फ्लॅटनेस टेस्टींग ऑलरेडी कंपोनंट आसा तेजे आमी पळयलां कितें यूज करताले आमी स्पिरीट लेवल रायट एंड युअर आनी कितें आशिल्लें तें ऑटो कोलिमीटर ओके सो फ्लॅटनेस टेस्टींग सपोज इफ यू वॉन्ट टू डू द फ्लॅटनेस टेस्टींग ऑफ युअर स्लीप गेजीस हे हो आसा तो स्लीप गेज बीन कितें हे वर्कपीस ना हे आसा तें कितें आमचें मेजरींग इंस्ट्रुमेंट ऑर मेजरींग गेजीस यू कॅन सी स्लीप गेजीस इवन तुमचे मेजरींग टेबल्स ओके मेजरींग टेबल्स सो सपोज हेजी आमकां फ्लॅटनेस टेस्ट करपाक जाय मेजरींग टेबल्स सो इफ यू वॉन्ट टू चॅक द फ्लॅटनेस टेस्टींग ऑफ दीस थिंग्स इवन फ्लॅट्स यू कॅन से सो व्हेरी प्रिसायज आसपाक जाय आमचें कित्याक हेतूनच सपोज तुमचे एरर आसा इफ एरर इज देर इन मेजरींग गेजीस ओनली देन वॉट वील हॅपन डेफिनेटली दॅट एरर वील कम इन युअर मशीन कंपोनंट कित्याक हे स्लीप गेजीस मेजरींग टेबल कित्याक यूज करता आमी इन ऑर्डर टू डू द इन्स्पेक्शन ऑफ युअर वर्कपीस मशीन कंपोनंट्स ओके सो तेका लागून हे जे स्लीप गेजीस मेजरींग टेबल्स आसा ते सामके प्रिसायज आसपाक जाय मिन्स कितें ओबियसली एरर उरतलो तेतून ना म्हणना बट एरर मस्ट बी व्हेरी स्मॉल ओके व्हेरी स्मॉल एरर so if you want to measure or if we want to test the flatness of these measuring instruments or gauges that time we will use something called as आयकलां आसतलें तुमी optical flats okay so what are optical flats means कितें optical flats are just like एक ट्रांसपरंट तुमचे सिलिंड्रिकल हे आसतलें अशें एक कसो एक मिनट दाखयता तुमकां और हांगाच दाखयता ओके सो दीज आर ऑप्टिकल फ्लॅट्स पळय हे आसा न्ही हो आसा तो ऑप्टिकल फ्लॅट्स ओके ऑप्टिकल फ्लॅट्स and these are measuring surfaces सर तूं प्रेजेंट करता present means ओके ओके हय स्क्रीन प्रेजेंट करता हय दिसना तुमकां सर दिसती पडना हय सर सॉरी प्रेजेंट करपाक यादूच ना म्हाका सॉरी ओके पळय आतां दिसता
हय सर. ओके पळय कितें सांगतालो तुमकां सपोज आतां म्हणल्यार कितें पळयल्लें आमी फ्लॅटनेस टेस्टींग मेथड्स रायट स्ट्रेटनेस स्क्वेअरनेस सो हांगा आमी डिफरंट इंस्ट्रुमेंट्स यूज केले स्पिरीट लेवल ऑटो कॉलिमिटर रायट सो हे जे मेथड्स आसा आतां म्हणल्यार आमी जे मेथड्स पळयला सो दोज मेथड्स वी आर ओनली युजींग फॉर वर्क पीस डिफरंट मशीन कंपोनंट्स ओके सपोज इफ यू वॉन्ट टू मेजर द फ्लॅटनेस ऑफ यू आर मेजरींग गेजीस मेजरींग इंस्ट्रुमेंट जे आसा मेजरींग गेजीस आसा इवन तुमचे मेजरींग टेबल आसा स्लीप गेजीस फ्लॅट्स हेचे आमी फ्लॅटनेस टेस्टींग कशें करतले ओके सो हेका कितें जाय आमचो एरर जो आसा तो व्हेरी स्मॉल आसपाक जाय ओबियसली एरर आसतलो ओके बट व्हेरी स्मॉल एरर सो प्रिसायज जाय आमकां सो तेका आमी कितें यूज करता ऑप्टिकल फ्लॅट्स ओके सो ऑप्टिकल फ्लॅट्स मिन्स कितें पळय हे जे आसा न्ही वयर दवरला ते सो दोज आर जस्ट लायक सिलिंड्रिकल पीसीस सिलिंड्रिकल ग्लास टायप आसतलो ट्रान्सपरंट ओके सो दीज आर ऑप्टिकल फ्लॅट्स एंड दीज आर मेजरींग सरफेस हांगा जी पोनाक दवरला ती मेजरींग सरफेस ओके सो हांगा जाता कितें मेजरींग सरफेस हांगा पळय कॉन्वेक्स हांगा दिला तेणी सरफेस बट हांगा तो व्हडलो करून दाखयला ओके सपोज स्लीप गेज आसा तुमची स्लीप गेज आसा तेजी एक्चुअल सरफेस आसा असो आसता ना ओके सो ओन्ली तुमकां कळपाक लागून अशें दाखयलां सो आमी कितें करता हो एक ऑप्टिकल फ्लॅट मिन्स कितें एक सिलिंड्रिकल ग्लास पीस आसता ओके सिलिंड्रिकल ग्लास पीस आसा तो आमी जे सरफेस तुमकां चॅक करपाक जाय स्लीप गेज ऑर आनी कितें आसा मेजरींग फ्लॅट्स सपोज आसा तेजेर वो ऑप्टिकल फ्लॅट आमी दवरता कळ्ळें तुमकां तेजेर ऑप्टिकल फ्लॅट दवरता आनी आनी मोनोक्रोमॅटीक लायट पास करता हांगच्यान मोनोक्रोमॅटीक मिन्स जाणा न्ही तुमी ऑल हय सर. हय ऑल लायट वेव्स ऑर ऑल लायट रेज शूड हॅव कॉन्स्टंट वेवलेंथ आसता न्ही रेज आसा तेका ते कॉन्स्टंट वेवलेंथ आसा ती कॉन्स्टंट आसपाक जाय सो ती लायट आमी हेतूंतल्यान पास करता ओके सो सिन्स इट इज ट्रान्सपरंट हांगच्यान डायरेक्टली पास जातली आनी थोडी आसा ते हांगा रिफ्लेक्शन जातली ओके थोडे रिफ्लेक्शन जातली लायट दिसता तुमकां ते सांगलें अशी मोनोक्रोमॅटीक लायट पास करता ओके सो सिन्स इट इज ट्रान्सपरंट ती अशी पास जातली ओके आनी हो जो बॉटम सरफेस आसा ऑप्टिकल फ्लॅट आसा ती रिफ्लेक्ट जातली ओके आनी दुसरी आनी आसा ती हेतूंतल्यान पास जातली रिफ्रॅक्ट जातली रिफ्रॅक्शन जातलें आनी रिफ्लेक्शन जातलें ओके रिफ्रॅक्ट जातली आनी हांगच्यान परत रिफ्लेक्ट जातली ओके सो फ्रॉम दीस मेजरींग सरफेस अगेन इट वील रिफ्लेक्ट बॅक कळ्ळें तुमकां ओके सो हे जे बोथ लायट रेज हांवें हांगा ड्रॉ केला ओके these light rays are exactly 180 degree out of phase ओके सो तेका लागून हांगा जें दिसता आमकां ओके सो हांगा लायट आमकां दिसना अशें ब्लॅक दिसता ओके सो आमी पळयता तेन्ना अशें तुमकां फ्रिंजीस दिसता इंटरफेरन्स फ्रिंजीस म्हणटा हेका कितें म्हणलां फ्रिंजीस ओके सो दीज आर कॉल्ड एज फ्रिंजीस ओके सो आमचे जे आउट ऑफ फेज आसा ते आमकां अशे फ्रिंजीस टायप दिसता सो तेज्या वयल्यान कळटा आमकां वेदर तो सरफेस आसा तो कॉन्वेक्स आसा कॉन्केव आसा सपोज कॉन्वेक्स आसा जाल्यार पळय अशें आसता ओके सी ही मिडल जी फ्रिंज आसा ती असो गोल सर्कल टायप आसतलो देन मातसो मुखार गेलो तूं ही फ्रिंज आसा ती थीक आसतली ओके सो एज यू मूव आउटसायड ही जी फ्रिंजीस आसा तेजी थिकनेस लेस जायत वयता नोटीस केला तुमी थिकनेस आसा ती लेस जायत उरता केन्ना वेन दी सरफेस इज कॉन्वेक्स सरफेस ओके सो फ्रिंजीस थिकनेस लेस जायत वयता ओन्ली मिडल आसतलो लेस जायत गेली रायट एक जालें आतां दुसरें सपोज आतां तुमी चॅक करपाक जाय हे फ्रिंजीस आसा ते हांव कितें करतलो जस्ट मातशें हांगा पूश करतलो पळय हांगा मिडल आसा पळय ऑप्टिकल प्रेस तेजो जस्ट पूश करतलो हांगा सो पूश करता तेन्ना कितें जातलें हे जे गॅप आसा ते स्लायटली रेड्यूस जातले ओके सो तितले रेड्यूस जाता तितलेंच पळोवन हें कितें जाता मागीर फ्रिंजीस वील मूव अवे फ्रॉम युअर सेंटर
when your surface is convex. ओके, कितें सांगला हांवें, जेन्ना कॉन्वेक्स आसता तेन्ना फ्रिंजीस थिकनेस will reduce from center. ओके, आनी एक दुसरें कितें सांगलां, सो दिस इज फर्स्ट कंडिशन. सेकेंड, ओके, प्रेसिंग एट मिडल फ्रिंजीस कितें जाता म्हणला तुका, इट इज मुवींग अवे फ्रॉम युअर सेंटर. ओके, फ्रिंजीस मुवींग अवे फ्रॉम सेंटर. हे जालें सरफेस जेन्ना कॉन्वेक्स आसता तेन्ना. ओके, कॉन्वेक्स सरफेस. सो इफ युअर सरफेस इज लायक दीस, कॉनकेव जेन्ना आसता सो हांगा कितें जातलें, कॉनकेव सरफेस एक्झॅक्टली अपोजीट जातलें. हांगा पळयता तुमी, हो जो सेंटर आसा तो स्मॉल आसा. ओके, स्मॉल आसा हांगा पळय, बिगर सेंटर आशिल्लो. ओके, हांगा स्मॉल आसा. हेजो मिनींग कितें, इफ वी प्रेस एक्झॅक्टली एट अ मिडल. ओके, हे मागीर पळोवया. ओके, हेजो मिनींग कितें, द फ्रिंजीस विच आर क्लोजर टू द सेंटर्स आर थीन. ओके, हे थीन आसतले. एज वी मूव अवे फ्रिंजीस थिकनेस इनक्रीज जाता, रायट. ओके, सो सपोज आमी हांगा प्रेस केला, प्रेस जातकीर मातसो पळय कर्व जालो तो दिसता तुमकां, ऑप्टिकल फ्लॅट मातसो कर्व जालो, रायट. तेन्ना हांगा कितें जालें, आमचे गॅप आसा ते रेड्यूस जाले, एअर गॅप रेड्यूस जाले. सो फ्रिंजीस आसा तेजे इफेक्ट पळय कसो पडलो तो. सेंटर आसा, सेंटर फ्रिंज, देन थिकनेस. ओके, स्मॉल थिकनेस. आनी आमी जेन्ना अशें वयता अवे फ्रॉम सेंटर, थिकनेस पळय, फ्रिंजीस थिकनेस पळय कितली इनक्रीज जाला ती. ओके, सो हें आसा फर्स्ट कंडिशन, फ्रिंजीस थिकनेस वील इनक्रीज. सो नाव आतां आमी इन मिडल प्रेस करता. ओके, इन मिडल प्रेस करता तेन्ना कितें जाता, मिडल प्रेस करता तेन्ना हे गॅप आसा तें ऑब्वियसली रेड्यूस जाता. ओके, देन दीस फ्रिंजीस वील मूव टुवर्ड्स द सेंटर. ही जी फ्रिंज आसा पळय हांगा. ओके, सो आमी मिडल प्रेस करता ती अशी हांगा वयतली. हांगा कितें जातालें, इट वॉज मुवींग अवे फ्रॉम सेंटर. सपोज ही फ्रिंज आसा तुजी. ओके, मिडल प्रेस केलें, अशी गेली अवे फ्रॉम सेंटर. कळ्ळें तुमकां. सो हेतून सपोज कॉनकेव आसा सरफेस, कॉनकेव. ओके, सो फर्स्ट कितें सांगलां तुमकां, थिकनेस increase from center. Okay, so second condition कितें सांगलें, pressing at middle fringes moving towards the center. Okay, so आमचे जे एरर जो फायंड आउट करता, मीन्स हो सरफेस थिकनेस मीन्स कितलो एरर आसा, एरर जो फायंड आउट करता. सो फायनली वी हॅव सम इंस्ट्रुमेंट, तें तुमकां सिलेबसान ना. ओके, जस्ट बेश्टो सांगता हांव. हे जे थिकनेस तुमी आसा, हे जे गॅप आसा ते तुमी मेजर करतात बाय युजींग दॅट इंस्ट्रुमेंट. ओके, सो फ्रॉम दीस गॅप ऑर फ्रॉम दीस थिकनेस ऑफ फ्रिंजीस यू वील गेट दीस डिस्टन्स. ओके, सो तें नाका आमकां. ओन्ली तुमकां कितें जाय, सरफेस जेन्ना कॉन्वेक्स आसता, ओके, असो सरफेस आसता तेन्ना फ्रिंजीस आसा तेजो पॅटर्न असो आसता. ओके, आनी कॉनकेव जेन्ना आसता तेन्ना फ्रिंजीस आसा तेजो पॅटर्न असो आसता. आतां सपोज ऑर तुमकां डायरेक्टली एक व्हिडिओ दाखयता हांव. एक मिनट स्टॉप प्रेजेंट मातशें स्टॉप करता हांव. ओके, जस्ट वो व्हिडिओ पळया तुमी. एक मिनट.
आयकपाक येता तुमकां पळया हय सर. ओके ओके ऑप्टीक बॉक्स ओके सो हांगा मेजरमेंट करतात आमी सो दीज आर ग्लास पीसीस मीन्स आमी घेवपाक शकता स्लीप गेजीस ओके आनी ते आसा ते ऑप्टिकल फ्लॅट्स दिसता तुमकां फ्रिंजीस ओके स्मॉल एअर गॅप जे आसता ताका लागून आमकां फ्रिंजीस दिसता मोनोक्रोमॅटीक लायट पास केला तेणी ओके सो जस्ट मूव करता तो ओके सारकें चेक करपाक ओके सो दुसरो चेंज केलो तेणी सरफेस चेंज केलो ओके सो ताका सुद्दां एरर आसा ताका सुद्दां एरर आसा सो हो जो सरफेस आतां चेक केला तेणें तो कसलो सरफेस थिकनेस डिक्रीज जायत वयता रायट सो इट इज कॉन्वेक्स सरफेस सो हे ऑप्टिकल फ्लॅट ओके ऑप्टिकल फ्लॅट सिलिंड्रिकल टायप आसता ते ग्लास पीसीस टायप ताका म्हणटा आमी ऑप्टिकल फ्लॅट ओके सो तो वर्कपीस मेजर करता हो आमी वर्कपीस कॉन्सिडर कर वयर दवरलो तो ताणें ओके सो हो आसा तो कॉन्वेक्स सरफेस कित्याक फ्रिंजीस थिकनेस आसा ती पळय डिक्रीज जायत वयता रायट आतां उलटो केलो तेणें पळय आतां पळय हे फ्रिंजीस आसा ते पॅरलल जेन्ना आसता अशें ओके युनिफॉर्म एअर गॅप जेन्ना आसता युनिफॉर्म एअर गॅप मीन्स कितें एरर आमचो आसतना ओके युनिफॉर्म एअर गॅप जेन्ना एरर कांयच ना कॉन्वेक्स ना पॅरलल आसा सरफेसीस तेन्ना आमकां अशे फ्रिंजीस दिसतले पॅरलल फ्रिंजीस म्हणटा ताका ओके कळ्ळें तुमकां एरर कांयच ना सामको फ्लॅट आसा सरफेस सो मेजर करता तेन्ना अशे पॅरलल फ्रिंजीस दिसतले आमकां ओके सो आय थिंक कॉनकेव तेणें केलो ना आय थिंक कॉनकेव सरफेस चेक केलो ना एक मिनट केला दिसता हय केला सो हो आमचो कॉनकेव सॉरी ना इवन हो सुद्दां कॉन्वेक्स कित्याक फ्रिंजीस थिकनेस तुमचे डिक्रीज जायत वयता एज वी मूव अवे फ्रॉम सेंटर रायट ओके सो कळ्ळें न्ही तुमकां हें तुमकां जस्ट कशें चॅक करता तें दाखोवपाक जाय आशिल्लें सो ताका लागून प्रेजेंट केल्लें ओके जस्ट ओके सो दुसरी तुमकां प्रेजेंट करता ओके सो हें जालें अबावट ऑप्टिकल फ्लॅट्स हेचे नोट्स दिता हांव तुमकां मागीर तुमी जस्ट रिफर कर ओके सो आतां म्हणल्यार जें केलां हांवें दीस इज ऑल अबावट अवर टेस्टींग टॅक्निक्स टेस्टींग मेथड्स रायट सो इन युअर सिलेबस इतलेंच आसा उरलां तें तुमचें रावंडनेस चॅक करपाचें तें तुमकां सांगता हांव अबावट दॅट रावंडनेस ओके सो आतां आमी नेक्स्ट तुमचें आसा एक मिनट नेक्स्ट तुमचें आसा कंपॅरेटर्स ओके सो हेतून कितें करपाचें वॉट आर द डिफरंट टायप्स ऑफ कंपॅरेटर्स आर दे मीन्स तुमचो मेकॅनिकल कंपॅरेटर आसा रायट तुमचो ऑप्टिकल कंपॅरेटर इलेक्ट्रिकल कंपॅरेटर इलेक्ट्रॉनिक कंपॅरेटर सो बेस्ड ऑन द डिफरंट टेस्टींग मेथड्स ओके वी आर युजींग डिफरंट टायप्स ऑफ कंपॅरेटर्स ओके सो हेतून आमी बेजिकली कितें पळयतले मेकॅनिकल कंपॅरेटर्स आसा तेजें कंस्ट्रक्शन ओके आनी न्युमॅटीक कंपॅरेटर्स आसा आमचो न्युमॅटीक मीन्स कितें न्युमॅटीक
हायड्रॉलीक आसता जे न्युमॅटीक आसता रायट. हायड्रॉलीक आसा तितून कितें करता आमी वॉटर यूज करता, वॉटर ऑर ऑयल, लिक्वीड यूज करता बेजिकली, वॉटर न्ही लिक्वीड यूज करता. ओके आनी न्युमॅटीक आसा तितून बेजिकली एअर यूज करता, एअर. ओके सो डिफरंट कंपेरेटर्स आसा आमचे. सो ऑल दीस थिंग्स वी वील स्टडी इन दीस सब टॉपीक, चॅप्टर न्ही मो. ओके सब टॉपीक. आतां कंपेरेटर्स मिन्स कितें कोण सांगता म्हाका, कोणाक आयडिया आसा? आमी ऑलरेडी यूज केला मेकॅनिकल कंपेरेटर इन लॅब आय थिंक. ना सर. ओके जाले दोगूच जाण आसा, बाकी सगळीं गेली. ओके पळय कंपेरेटर्स मिन्स कितें? कंपेरेटर्स इज अ इंस्ट्रुमेंट. ओके इंस्ट्रुमेंट. पळय सो दिस इज युअर जस्ट एक मिनट, दिस इज युअर कंपेरेटर. ओके okay so comparator is an instrument which is used to compare. suppose वो तो हांवें कंपेरेटर कन्सिडर केलो. ओके आनी वो तुमचो वर्कपीस आनीक वो तुमचो सपोज हांव एक गेज घेता, गेज पळोवया आमी मागीर. ओके एनी गेज. ओके सो इन कंपेरेटर्स वी विल कंपेर the linear difference between your comparator piece and your workpiece. Okay so whatever linear म्हटलं हांवें angular न्ही. okay so comparators we are using only for linear dimension याद दवर. okay very important, linear dimensions, and whatever this linear difference we will get between component and workpiece, so that difference we will magnify further. Okay so we will magnify further in order to make it more readable. So this is basically your comparator. Okay so it indicates the difference between your standard component or your what standard boy masterpiece standard. Okay difference between standard component and workpiece. so तेका आमी comparator यूज करता. आतां तुमी मेकॅनिकल कंपेरेटर यूज केलो रायट इन लॅबान मेकॅनिकल कंपेरेटर यूज केलो. एक डायल गेज घेतलेली, वर्कपीस आसा तो रोटेट केलो. सो थंय कितें केल्लें तुमी बेजिकली एक बेस्ट रफ वर्कपीस कन्सिडर केल्लो, एक शाफ्ट टायप याद आसा न्ही तुमचो. ओके सो हो आसा तो शाफ्ट आसलो तुमचो रफ शाफ्ट, आनी एक मास्टरपीस घेतलेलो. ओके तेका कितें आसलें झिरो एरर सामको लेस आशिल्लो. ओके सो हो मास्टरपीस मिन्स हो एक स्टँडर्ड. सो वी हॅव कंपेर्ड द डायमेन्शन ऑफ दीस स्टँडर्ड वर्कपीस विथ युअर measuring workpiece. Okay so these are comparators. This is all about comparators. So after magnification we will get around 2000 to 40,000 magnification, 40,000 times into घातलो ते टाइम्स. ओके 40,000 टाइम्स आमकां इतले झूम करून मेळटा इन कंपेरेटर्स. आतां मेकॅनिकल कंपेरेटर डायल गेज आशिल्ली तेतून तुमकां फायनली रिडींग दाखयताले ते मॅग्निफाय करून दाखयताले रायट, एरर आसा तो. सो तशें. ओके सो आतां आमी कित्याक यूज करता हो? पळय कंपेरेटर्स कित्याक यूज करता आमकां, यूज कितें हेजे पळय तेजे पयलीं आमी क्लासिफिकेशन कंपेर हय कंपेर करपाक रायट. बट कितें कंपेर करपाक, कितें कंपेर करपाक फायनली कितें जाय आमकां. सपोज तुमचें मास प्रोडक्शन चल्लां ऑर कितें डायमेन्शन मेजर करपाक, फायनली वर्कपीस आसा तो सारको आसपाक जाय, तो कंपेर करपाक जाय आमकां स्टँडर्ड कंपोनंट आसा तेका ऑर स्टँडर्ड गेज आसा तेका. सो तेका लागून आमी वर्कपीस यूज करता. आतां पळय हें सांगलेलें तुमकां डिफरंट टायप्स ऑफ युअर कंपेरेटर्स. एक सांगलो तुमकां मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक, न्युमॅटीक, फ्लुईड एंड combination of all. Okay so based on this method which is used to magnify and record, okay we have to select this comparator right. so आता आमकां पळय इन युअर सिलेबस मेनली आमी फोकस करतले सिन्स तुमी मेकॅनिकल रायट, मेकॅनिकल एंड न्युमॅटीक
बाकीचे इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल आमकां इम्पॉर्टंट ना, ओन्ली मॅकॅनिकल एंड न्युमॅटीक. ओके, आतां युजीस पळय तेजे मातसो फास्ट वयता हांव. ओके, कित्याक हें इजी आसा. फर्स्ट कितें चॅक करपाक यूज कितें, इन ऑर्डर टू चॅक द कंपोनंट्स जालो, मशीन कंपोनंट जालो, मशीन कंपोनंट ओबियसली मशीन कंपोनंट चॅक करपाक यूज करता. बट न्यूली परचेस्ड गेजीस, इवन गेजीस सुद्दां चॅक करपाक आमी स्टँडर्ड मास्टरपीस दवरता, तें जाणा न्ही तुमी. आतां एक परचेस केला तुमी, न्यू स्लीप गेजीस परचेस केला, बट तुमकां ती सारकी आसा काय ना तें कशें कळटलें. ओके, सो तें सुद्दां चॅक करपाक जाय तुमी. सो आमी आमचें एक स्टँडर्ड मास्टरपीस दवरतले आमी. सो ऑल गेजीस शूड बी कंपेरेबल टू दॅट न्यूली परचेस गेजीस. सपोज डिफरन्स चड आसा, डिफरन्स सपोज मेळटा तुमकां, सो यू हॅव टू रिटर्न दीस न्यूली परचेस गेजीस. कळ्ळें तुमकां. सो एलॉंग वीथ मास्टरपीस, एलॉंग वीथ कंपोनंट ऑर वर्कपीस, यू आर युजींग टू चॅक न्यूली परचेस गेजीस ऑल्सो. ओके, आतां पळय comparators are used as lab standard. lab standard means कितें. आतां तुमकां लॅब स्टँडर्ड आसा तेतून कितें आसता, लॅबान कितें आसता बेजिकली इन्स्पेक्शन गेजीस आसता, रायट. इन्स्पेक्शन गेजीस सो सारके सेट करपाक जाय, वर्कींग ऑन इन्स्पेक्शन गेजीस सारके सेट करपाक जाय विथ द हेल्प ऑफ युअर मास्टर गेज, रायट. सो तेका लागून आमी कंपेरेटर यूज करता. सो सेकेंड यूज जालो. एंड एज अ वर्किंग गेज, इवन तुमचे क्वालिटी कंट्रोल सपोज पळयलें तुमी, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट. ओके, सो तेतून कंपेरेटर आसता, ते कंपेरेटर कित्याक यूज करता आमी. ओके, सो दोज कंपेरेटर आर यूज्ड एज वर्किंग गेज. ओके, आनी फायनली एज अ फायनल इन्स्पेक्शन गेज. ओके, सो दीज आर द डिफरंट युजीस. आतां पळय कंपेरेटर पळयले आमी. सो वॉट आर द डिफरंट, कशें जाय आमकां कंपेरेटर, वॉट आर द डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपेरेटर. ओके, सो कंपेरेटर आसा तेजे पळय डिजायन आसा तो रोबस्ट आसपाक जाय. रोबस्ट डिजायन मीन्स कितें, पळय तुमी ऑलरेडी डायल गेज यूज केला, रायट. डायल गेज यूज केला. सो ही डायल गेज आसा, तेका हांगा एक प्लंजर आसा. ओके, सो प्लंजर आसा. आतां डायल गेज आसा तें मॅक्झिमम कितें 1 सेंटीमीटर सपोज तुमी चॅक करपाक शकता, 1 सेंटीमीटर, रायट. सपोज बाय मिस्टेक तुमी ह्या जे 1 सेंटीमीटर आसा तें एक्सीड केलें बाय मिस्टेक. ओके, सो तेन्ना हो डायल गेज बाय मिस्टेक जावपाक शकता न्ही, कित्याक आमी हें हँडल कशें करतात, वर्कपीस डायल गेज बीन हँडल कशें करता पळयलां न्ही तुमी. सपोज तुमचें मास प्रोडक्शन आसा, तें सारकें हँडल करपाक आमकां टायम आसना. सो हांगा थंय उडयलें, सो तेका लागून तें डॅमेज जावपाक जायना, एक्युरेसी तेजी कमी जावपाक जायना. ओके, इवन वो टच करून उरलो सपोज स्प्रींग आसा तेजी डॅम्पिंग जी आसा ती तुमची वेरी जावपाक जायना. सो युअर कंस्ट्रक्शन एंड डिजायन मस्ट बी रोबस्ट. कळ्ळें, कंपेरेटर आसा ती. ओके, सो फर्स्ट वन जालें. देन युअर लिनियर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केल. आतां पळय तुमकां मेजर करपाक स्केल आसा. ओके, मेजर करपाक स्केल आसा. सो दीस इज अ बेस्ट मेथड टू कंपेर. हें जाणा न्ही तुमी, स्केल अशें स्केलिंग जें दिता आमी, सो दीस इज द बेस्ट मेथड. सो कंपेरेटर आसा ते मोस्टली आमी अशें स्केल आसले सिलेक्ट करपाक जाय. सो हें आसा तें युनिफॉर्म आसपाक जाय. युनिफॉर्म हांगा कांय चड एरर आसपाक जायना. ओके, सो तेका म्हणटा आमी लिनियर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केल. लिनियर कॅरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो हो जालो सेकंड. मागीर थर्ड कितें, हाय मॅग्निफिकेशन. थर्ड कॅरेक्टर तेका मॅग्निफिकेशन आसा तें चड आसपाक जाय, कित्याक मोर रिडेबल चड आसपाक जाय. ओके, इवन इट शूड बी क्विकर इन रिजल्ट. ओके, क्विकर इन रिजल्ट म्हणजे काय कितें, डायरेक्टली तुमकां चड टायम लागपाक जायना सेट करपाक. ओके, सेट केलें डायरेक्टली मूव केलें ऑर ऑपरेट केलें डायरेक्ट तुमकां रिजल्ट्स मेळपाक जाय. ओके, सो इट शूड बी क्विकर इन रिजल्ट एंड इट शूड बी वर्सेटायल. वर्सेटायल आसता तें मिनींग कोण सांगता म्हाका. वर्सेटायल. ओके, आतां पळय सपोज तुमची सरफेस रफनेस आसा, जस्ट एग्जांपल दिता तुमकां. वर्सेटायल सरफेस रफनेस आसा आनी हेका सपोज तुमी डायल गेज यूज केली. सपोज
हे जें दिसता न्ही तुमकां हें आसा तें 1 सेंटीमिटर एबाव 1 सेंटीमिटर आसा पळय युजली आसना तें बट बेश्टो एक सरफेस आसा तेजी ही जी वेरिएशन आसा तें एबाव 1 सेंटीमिटर आसा ओके सो दॅट टायम दॅट डायल गेज वील नॉट बी वर्सेटायल कळ्ळें न्ही that dial gauge will not be or that mechanical comparator will not be versatile in order to inspect this surface or in order to measure this surface. Dial gauge आमचे maximum limit कितले आसा 1 centimeter above that you cannot go. Okay, so that is called as versatility. Okay, so I'm just बरयता हांव wide range of it should have wide range of measurements. Okay, then it should have low contact pressure and hardened plunger. पळय प्लंजर आसा तेका चडशे आमी हार्डन प्लंजर मीन्स कितें तो प्लंजर जो आसा तेजो पॉयंट आसता न्ही पॉयंट जो आसता सो हांगा आमी एक तर डायमंड लायता जाणा न्ही तुमी सो दॅट इट कॅन नॉट इजिली वेअर जावचें ना सो इट शूड हॅव हार्डन प्लंजर ऑल्सो इट शूड हॅव लो कॉन्टॅक्ट प्रेशर जर चडूच हाय आसा हें चड तुमच्या हांगा फ्रिक्शन चड जातलें हांगा तुमचे एरर जावपाचे चान्सीस चड आसतले फ्रिक्शन चड जाता म्हणटकीर रायट सो इट शूड हॅव लो कॉन्टॅक्ट प्रेशर ऑप्टिमल कॉन्टॅक्ट प्रेशर आसपाक जाय कॉन्टॅक्ट प्रेशर मीन्स कितें कॉन्टॅक्ट प्रेशर बिटवीन युअर this plunger point and measuring surface so हो जो pressure आसा so that we are calling as contact pressure. Okay, so next कितें sorry pointer should be properly damped the meaning कितें I think तुमी थियरी ऑफ मशीन शिकला तुमी आय डोंट थिंक वायब्रेशन बीन शिकला तुमी ना दिसता जाता ना तें मागीर आसतलें पळय डॅम्प प्रॉपरली डॅम्प्ड मिन्स कितें हो तुजो डायल गेज आसा तेजो पॉयंटर रायट सपोज दीस इज पॉयंटर ऑफ डायल गेज ओके सो डायल गेज आतां आमी मेजर करून सडनली स्टॉप केलें ओके सो हो जो पॉयंटर आसा तो असो मूव जावपाक जायना हांगा मूव जाता असो मूव जाता पेंडुलम खबर आसा न्ही तुमकां सो एकदम सपोज स्टॉप केलें सो असो मूव जावन स्टॉप जावपाक जायना कळटा तुमकां कितें सांगता तो सो स्टॉप करता तेन्ना सारको असो स्टॉप जावपाक जाय आतां स्प्रींग आसा तर तेजी जी स्प्रींग आसा ती सपोज प्रॉपरली डॅम्प ना कितें जातलें सडनली अशें स्टॉप केलें न्ही अशें जातलें आनी मागीर असो जावन मागीर स्टॉप जातलो सो अशें जाता तेन्ना कन्फ्युजन जातलें ऑपरेटर आसा तेका ओके सो दीस इज नॉट प्रॉपरली डॅम्प ओके सो आमचो कंपेरेटर आसा तो प्रॉपरली डॅम्प्ड आसपाक जाय हें म्हणटा तो खबर आसा तुमकां आतां डायल गेज आसा तेतून कितें आसता डिफरंट गियर्स आसता लिवर्स आसता सो फ्रिक्शन जाता तशें ओबियसली बॅकलॅश एरर येतलो तेका ओके सो तेका लागून जे बॅकलॅश एरर सो न्यू डायल गेज जी आसता ती आसा ती बॅकलॅश फ्री आसता बॅकलॅश एरर आसना तेका ओके सो बॅकलॅश एरर आसपाक जायना प्लस इट शूड बी फ्रिक्शनलेस केन्ना जातलें सपोज आमी मुवींग कंपोनंट्स आसा तेतून बॅरिंग यूज केली सो दॅट टायम इट वील बी फ्रिक्शनलेस इवन इट शूड नॉट एफेक्टेड बाय टेम्परेचर इफेक्ट ओके सपोज टेम्परेचर वेरी जालो तुमच्या रिडींग चेंज जावपाक जायना ओके इट शूड नॉट एफेक्टेड बाय टेम्परेचर इफेक्ट नेक्स्ट कितें रिटर्न टू इट्स इनिशियल झिरो पोजिशन आतां यूज करून दवरली तुमी डायल गेज ओके डायल गेज सपोज हांगा झिरो आसा ओके हांगा तुमचे अशें आसता न्ही डायल गेज ओके सो हांगा पॉयंटर आसा तो हांगा मेजर केलो तुमी आनी रिटर्न जेन्ना येता तो हांगा खंय तरी स्टॉप जालो ओके सो इतले तुमचे गॅप आसा रायट सो अशें जावपाक जायना इट शूड ऑलवेज रिटर्न टू इट्स इनिशियल झिरो पोजिशन ओके सो दीस आर द डिफरंट कॅरेक्टर आतां हो क्वेश्चन येता ओके वॉट आर द डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपॅरेटर ओके सो दीस आर द डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपॅरेटर आतां नेक्स्ट एक मिनट पळय आतां आमचे डिफरंट कंपॅरेटर आसा मॅकॅनिकल कंपॅरेटर आसा ओके सो वॉट इज द
आमकां मॅग्निफिकेशन पळय कंपेरेटर बेजिकली कित्याक यूज करता आमी टू मॅग्निफाय द लिनियर युअर लिनियर वेरिएशन रायट लिनियर वेरिएशन आसा तें मॅग्निफाय करपाक यूज करता सो इन मॅकॅनिकल कंपेरेटर कशें मेळटा आमकां मॅग्निफिकेशन आमी कितें यूज करता गियर्स यूज करता विथ द हेल्प ऑफ गियर्स प्लस लिवर्स रायट इवन तुमचे गियर्स एंड पिनियन्स सो हे सगळे अरेंज करून आमकां मॅग्निफिकेशन मेळटा इन केस ऑफ मॅकॅनिकल कंपेरेटर ओके सो दीज आर द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंपेरेटर आतां सेकंड सपोज इलेक्ट्रिकल कंपेरेटर घेतलो इलेक्ट्रिकल कंपेरेटर आसा तेका कितें यूज करता आमी मॅग्निफाय करपाक सो हें तुमकां हो ना ओके सो तुमकां जस्ट एड केला आमी बेश्टें हो तुमचो इलेक्ट्रिकल कंपेरेटर आतां हें मिटर आसा न्ही हो आसा तो मिटर हांगा डेविएशन दाखयता ओके सो हांगा डिफरंट कंपोनंट्स आसा हांगा सो हांगा कॉयल्स आसा हांगा हो आर्मेचर आसा ओके सो जेन्ना आमी हो आसा तो प्लंजर ओके हो प्लंजर आनी हो वर्कपीस सो जेन्ना आमी मेजर करता हो प्लंजर आसा वयर सकयल मूव जातलो ओके वयर सकयल मूव जातलो दॅट मिन्स हो जो मदीं आर्मेचर आसा सो दीस आर्मेचर वील ऑल्सो मूव एबाव बिलो ओके सो तशें जाल्यार कितें जातलें ऑल्सो this distance the distance between your coil and armature will also vary okay so हांगच्यान तुमचो जो वेरी जातकीर कितें जाता हो जो करंट आसा तो एम्प्लिफायर आसा तेतून पास जाता ओके सो दीस करंट will pass into amplifier and finally it will show the deviation कळ्ळें तुमकां so we are getting the magnification for electrical comparators with the help of Wheatstone bridge हेका म्हणटात Wheatstone bridge ओके हांगा जे आसा हो जो अरेंजमेंट आसा तेका आमी Wheatstone bridge म्हणटात यूज केला काय खबर ना म्हाका ओके सो Wheatstone bridge so by using Wheatstone bridge we are getting magnification in terms of electrical comparator आता ऑप्टिकल कंपेरेटर खबर आसा तुमकां ऑलरेडी कोण सांगपाक शकता म्हाका how we will get the magnification in case of optical comparator optical means कितें याद जाता तुमकां कितें यूज करता आसतलें मेन laws of so lenses correct lenses and mirrors okay auto collimator खबर आसा तुमकां ऑलरेडी lenses mirrors so laws of reflection आणि refraction आमी यूज करता very good okay reflection and refraction so reflection and refraction कशें मेळटा basically by using lenses right mirror so हें सगळें यूज करता आतां लास्ट आसा हो न्यूमॅटीक कंपेरेटर हो एनीवे डिटेल एक्सप्लेन करता तुमकां कित्याक हो एग्जामीक येता एवरी टायम न्यूमॅटीक कंपेरेटर ओके सो हेतून आमी एअर प्रेशर and velocity okay velocity so anyway मागीर पळोवया आमी ओके सो सद्या कशें दवरुया आतां पळय मॅकॅनिकल कंपेरेटर आसता तेजें एक एग्जांपल कितें सांगलेलें तुमकां डायल गेज ओके सो बिफोर दीस एडवांटेजीस ऑफ मॅकॅनिकल कंपेरेटर वी विल जस्ट सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ डायल गेज ओके सो जस्ट एक व्हिडिओ दाखयता तुमकां डायल इंडिकेटर कंस्ट्रक्शन ऑफ डायल इंडिकेटर जस्ट स्टॉप करता हांव एक मिनट स्लो आता आवाज येतो Dial indicator. Dial indicator is a very important comparator used in mechanical industrial measurement applications. In this video we'll learn about dial indicator. This video will cover the following. 1. Working principle of dial indicator. 2. Its construction.
3. Working. 4. Applications. 5. Advantages and disadvantages. If you are new to ADTW, click on the subscribe button below and turn on the notification to get all the updates. Let's start. Working principle of dial indicator. It operates on the principle that a very slight upward pressure on the spindle or plunger at the contact point is multiplied through a system of gears and levers, and it is indicated on the face of the dial by the pointer. Dial indicators consists of a body with a round graduated dial and a contact point which is connected with a gear train so that pointer on the dial face magnifies and indicates the amount of plunger movement. Construction of dial indicator. Dial gauge consists of following parts: circular dial body, pointer or indicating hand, round graduated dial, revolution counter, bezel, bezel clamp, dust cap, stem, plunger, which is subdivided into spindle, and contact point. In the side view we can see other parts: crystal, back, mounting lug. After opening the body of dial indicator we can see internal parts, and those are rack, rack guide, gear train, hairspring, and coil spring. Working of dial indicator. Before we see the working of dial indicator, let us first understand how the magnification is achieved with the help of gears. Consider two gears A and B. These gears are mashing with each other. The number of teeth on the gear A is less compared to gear B. The smaller gear A is called pinion. When we rotate pinion by 1 revolution, the gear B rotate through a small angle. This depends on the gear ratio. Now, suppose we rotated gear B by 1 full revolution. The number of revolution of pinion is more. With this basic understanding, now we can see how the magnification of the plunger is achieved in the dial gauge. To obtain the necessary high magnification ratio in this instrument, gear and pinion arrangement is used. By arranging the gear train in a manner similar to a clock movement, there is a plunger which is a perfect sliding fit in its own bearings. This carries a rack which accurately meshes with a pinion A. The rotation of the plunger about its own axis is prevented by a pin attached to it, which is located in a slot in a rack guide. In order to keep the plunger in an extended or normal position, a light coil spring is employed. A small movement of the contact point causes the rack to turn the pinion A with which it is meshed. A large gear B is attached to the same spindle as pinion A. The gear B is further meshed with a pinion C, which thus magnifies the movement of pinion A. Attached to the second pinion C is another gear D which meshes with a third pinion E, mounted on the same spindle as the indicator pointer. This magnification is further enlarged at the tip of pointer by an amount depending upon its length. In order to take up backlash, a light hairspring H is always fitted to the dial gauge gear trains by meshing a gear F to pinion E and attaching spring with gear F, also to prevent gear backlash. The gears are precision cut, and the movement assembly resembles that of high-grade watch. After final assembly, each dial gauge is thoroughly tested and checked and properly calibrated by either a calibrated micrometer head or by the use of slip gauges. If the pointer moves more than 1 revolution, a revolution counter is also incorporated, which will correctly indicate the number of revolutions made by the main pointer and thus enable a complete reading to be made when the gauge is used for direct measurement. Also, we can rotate the round graduated scale to set the pointer to 0. In some dial indicators, 2 range pointers are given on the bezel, which are used to set the range. Applications of dial indicator. 1. Comparing 2 heights or distance between narrow limits. 2. To determine the errors in the geometrical form such as ovality, roundness, and taper. 3. For taking accurate measurements of deformation such as intention and compression. 4. To determine positional errors of surfaces such as parallelism, squareness, and alignment. 5. To check the alignment of lathe centers by using a suitable accurate bar between the centers. 6. To check the trueness of milling machine arbors, and to check the parallelism of shaper arm with table surface or vise. Advantages. 1. Dial indicator is the most flawless tool in taking Okay, so आता जे सांगलें तुमकां हांवें व्हिडिओ जो दाखयल्लो, so that is all about
सो दॅट इज ऑल अबाउट डायल इंडिकेटर. ओन्ली आमकां कितें आसा इम्पॉर्टंट कितें कंस्ट्रक्शन जें आसा ओन्ली तें कंस्ट्रक्शन कळ्ळें न्ही तुमकां. एक गियर आसता, पिनियन आसता, रायट. सो कळुना जाल्यार एनीवे तुमकां विडियो शेअर करतलो तो आनी नोट्स शेअर करतलो ऑन संडे. ओके, सो जस्ट रीड करात, इजी आसा तें, कळटलें तुमकां डायरेक्ट. आतां एडवांटेजीस ऑफ मेकॅनिकल कंपॅरेटर, इट शूड बी कॉम्पॅक्ट अँड रोबस्ट कंस्ट्रक्शन. हें ऑलरेडी पयलां आमी. इट शूड बी कॉम्पॅक्ट अँड रोबस्ट कंस्ट्रक्शन, रायट. कॉम्पॅक्ट आसपाक जाय. हांव सपोज कॉम्पॅक्ट ना जाल्यार कितें जातलें. आतां पळय तुमकां लॅबान हांवें पॉसिबल नाशिल्लें दाखोवपाक, रायट. सो हांवें कितें केल्लें, डायरेक्टली तो मूव केल्लो खंय व्हेल्लो तो वर्कशॉपान व्हेल्लो, रायट. कंपॅरेटर, मेकॅनिकल कंपॅरेटर, डायल गेज याद आसा न्ही तुमकां. सो सिन्स तो आमचो मेकॅनिकल कंपॅरेटर आसा तो पोर्टेबल आसा, रायट. पोर्टेबल ताका लागून पोर्टेबल आनी कॉम्पॅक्ट ताका लागून डायरेक्ट हांवें हातीन उबारलो आनी व्हेलो. बट सपोज दुसरें आतां न्युमॅटीक कंपॅरेटर बी घेतले तुमी, ते इतले हेवी आसता ते तुमकां उबारपाक सुद्दां मेळपाक ना, कळ्ळें. सो आमचे एडवांटेजीस कितें मेकॅनिकल कंपॅरेटर आसा तेजी, इट इज कॉम्पॅक्ट अँड रोबस्ट कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट इट इज पोर्टेबल. पोर्टेबल हें सांगलें तुमकां. पोर्टेबल मिन्स कितें, जें इजिली तुमकां व्हरपाक मेळटा, कॅरी करपाक मेळटा. सो दॅट पार्ट वी आर कॉलिंग एज पोर्टेबल. इट इज पोर्टेबल अँड चीप. चीप ऑब्वियसली चीप आसतलो कित्याक स्मॉल आसता तो कंपॅरेटर, रायट. इट इज क्वीक अँड इजी टू हँडल. क्वीक अँड इजी टू हँडल. आतां तुमचें क्वीक कित्याक आसतलें, तुमी डायरेक्टली तो जो मेकॅनिकल कंपॅरेटर आसा, डायल गेज आसा, ती डायरेक्टली तुमी सरफेस टेबल आसा तेजेर दवरून डायरेक्टली मेजर करपाक शकता. सेट आनी कांय करपाची गरज ना थंय. ओन्ली सेट 5 मिनटां सेट करपाचें, डायरेक्ट तुमी यूज करपाक शकता. बट बाकीचे कंपॅरेटर, ऑप्टिकल कंपॅरेटर बी आसा ते अशें ना. तुमकां ते खूब पार्ट्स आसता ते तुमचे सारके सेट करपाक पडटा. सो ताका खूब टायम लागता, रायट. सो आमची मेकॅनिकल कंपॅरेटर कितें, इट इज क्वीक अँड इजी टू हँडल. ओके, सो स्केल इज लिनियर अँड युनिफॉर्म. ओके, सो दीस इज इम्पॉर्टंट. आमकां एक्सटर्नल पावर यूज जायना आमकां. आतां ऑप्टिकल सुद्दां घेतलो, ऑप्टिकल म्हळ्यार मेन म्हळ्यार एक मोनोक्रोमॅटीक लायट जाय, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी जाय. इवन इलेक्ट्रिकल कंपॅरेटर घेतलो परत इलेक्ट्रिसिटी जाय. न्युमॅटीक घेतलो परत इलेक्ट्रिसिटी जाय. सो आमचो मेकॅनिकल कंपॅरेटर आसा ताका एक्सटर्नल पावर नाका. सो तो एक मेन एडवांटेज. ओके, सो नेक्स्ट तुमचे डिसएडवांटेजीस हे येता. ओके, फॉर 4 मार्क्स ते शुवर येतले तुमकां. ओके, सो डिसएडवांटेजीस कितें. आतां मेकॅनिकल म्हणल्यार कितें याद जाता तुमकां. मेकॅनिकल म्हणल्यार कितें याद जाता मोर मुवींग पार्ट्स. मेकॅनिकल म्हणजे कितें, मुवींग पार्ट्स ऑब्वियसली चड आसतले मेकॅनिकल कंपॅरेटर आसा ते. सो मुवींग पार्ट्स चड आसल्या कारणान फ्रिक्शन जातलें आनी वेअर जातलो. फ्रिक्शन एंड वेअर. ओके, ऑल्सो स्लॅकनेस ऑफ द मुवींग पार्ट. स्लॅकनेस मिन्स कितें, लूजनेस. ओके, आमी जशें यूज करता फ्रिक्शन चड जातलें ते मुवींग पार्ट्स आसा ते लूज जातले. ओके, सो बिकॉज ऑफ दीस एक्युरेसी आसा ती आमची एफेक्ट जातली. कंपॅरेटर आसा तेजी एक्युरेसी एफेक्ट जातली. ओके, स्लॅकनेस, ड्यू टू स्लॅकनेस. इवन इनर्शिया ऑफ मुवींग पार्ट्स. इनर्शिया म्हणजे जाणा न्ही तुमी, दीस टर्म इनवॉल्व्स वीथ मास डिनोट करता. आतां तुमी सपोज मेजर करता तेन्ना डिफरंट पार्ट्स जे स्मॉल पार्ट्स आसा ताका तुमची मास आसतलो, वेट आसतली, मास आसतलो ताका, रायट. सो बिकॉज ऑफ दीस मास केन्ना केन्ना तुमचे एरर सुद्दां येता तुमचो. ओके, सो मास आसा तेन्ना सपोज हो प्लंजर आसा तुमचो, सो मास आसा तो परत आनी वेट घालता हेजी. सो प्लंजर आनी चड मूव जाता. सो हांगा कॉन्टॅक्ट प्रेशर वेरी जाता. ओके, सो अशे प्रॉब्लेम्स जाता. सो दीस इज वन डिसएडवांटेज. आनी फायनली पॅरलॅक्स एरर हें आनी एक्सप्लेन करना तुमकां. पॅरलॅक्स एरर मीन्स ऑलरेडी खबर आसा, रायट. ओके, सो फायनली पॅरलॅक्स एरर. आतां पळय, वॉट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गूड डायल इंडिकेटर. पळय हें ऑलरेडी खबर आसा तुमकां. इट शूड बी रोबस्ट. इजिली तुमचो डॅमेज जावपाक जायना. ओके, रोबस्ट आसपाक जाय. रफ यूज करपाक मेळपाक जाय रोबस्ट. इवन प्रॉपर डॅम्पिंग ऑफ द पॉयंटर हें सांगलेलें तुमकां. मिन्स कितें, तो पॉयंटर जो आसा तो असो डेविएट जावपाक जायना. डेविएट जावन असो स्टॉप जाता पळय तसो जावपाक जायना. सो डायरेक्टली मेजर केलें एट परफेक्ट एक पॉयंटाचेर स्टॉप जावपाक जाय. सो स्प्रींग मस्ट हॅव प्रॉपर डॅम्पिंग. ओके, सो नेक्स्ट कितें, it must provide means to control the movement of plunger
लार्जर दॅन स्पेसिफायड हेंच सांगलेलें तुमकां. सपोज तुमचो डायल इंडिकेटर आसा आतां हेजें मॅक्झिमम लिमीट कितें 1 सेंटीमिटर. ओके 1 सेंटीमिटर. सो प्लंजर आसा तो 1 सेंटीमिटर वेरी जावपाक मूव जावपाक शकता. सो एबाव 1 सेंटीमिटर सपोज गेले तुमी, सो अशें मेकानिजम आमी प्रोवायड करप सो दॅट इफ इट मूव्स एबाव ऑर बियॉन्ड 1 सेंटीमिटर ऑल्सो दीस इंस्ट्रुमेंट शूड नॉट गेट डॅमेज. कळ्ळें तुमकां. सो this is all about, so provide means to control movement of plunger larger than specified. हांगा स्पेसिफायड कितलें आसा 1 सेंटीमिटर. ओके आमी मीन्स प्रोवायड करप टू कंट्रोल द प्लंजर. ओके मुवमेंट लार्जर दॅन स्पेसिफायड. ओके एंड प्लंजर मुवमेंट इन आयदर डायरेक्शन. ओके सो प्लंजर आसा तो पळय अशें जावपाक जायना. तुमी हो जो प्लंजर आसा पळय तो मूव केलो, सो मातसो मूव करतकीर हांगा कॉन्टॅक्ट प्रेशर वेरी जालो अशें जावपाक जायना. सो थ्रू आउट तुमचो मूव जाता न्ही तेन्ना प्रेशर जो आसा कॉन्टॅक्ट प्रेशर जो आसा तो सेम वचपाक जाय. चड प्रेस केल्यार चड कॉन्टॅक्ट प्रेशर जाता अशें जावपाक जायना. सो दीस वील एफेक्ट द एक्युरेसी. सो लिनियर आसपाक जाय तें, नॉन लिनियर आसपाक जायना मुवमेंट. ओके सो प्लंजर मुवमेंट शूड बी इन आयदर डायरेक्शन. ओके सो नेक्स्ट आमी फाल्यां पळोवया. दीस आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गूड डायल इंडिकेटर. ओके सो अशे डिफरंट आमचे इंस्ट्रुमेंट आसा रायट. सो ते फाल्यां पळोवया आमी. ओके ओके एटेंडन्स आनी आर्या आनी स्विझर कोण अशें आनी ओंकार आशिल्लो रायट आनी वात्सल. Present, sir. येस येस ओके लेंड्रो आनी वात्सल. ओके सो थँक्यू एवरीवन. हो व्हिडिओ जस्ट घालता कोणाक. Thank you, sir. ओके ओके थँक्यू वेरी मच. ओके सर. येस येस ओके.